Hello everyone, very warm evening and namaste. This is Aditi Bhasin speaking in front of you. So I'm a psychologist by profession and artist by the night. So this is a live today where we are going to talk about mental health and also a lot about a new technique which is called EFT, which is emotional freedom technique. As slowly and gently we move forward, we'll understand what this technique is all about and how you can utilize this in your daily life. So, to start on with, I would like to ask one question to everyone who is present here. I would like to ask you, what are your views on mental health? How do you see mental health these days? Is it something you can talk about very freely? Is it something that you always wait? It's just like you cannot talk openly about your feelings to people around you, be it your parents, be it your colleagues, your friends, or somebody else. So, uh, before we start this out, in the chat, drop in where are you logging in from today. Also type yes if you have ever heard about EFT before, and no if this is completely new for you. So this session is going to be a very powerful experience because we are not just going to talk about mental health. We are also going to explore how to heal deeply without the fact that we are not just talking, but also using a technique to heal our own selves. So here's what I'll cover today for all of you. Firstly, we'll talk about mental health. What does it really mean? That is just beyond stress and anxiety. The second thing we'll talk about is that why in today's world just talking or just undergoing traditional therapy is not enough. And apart from that, a very important question which I have been asked a lot of time being a psychologist, and that is that why is today's generation feels more sad and are more prone to depression, while the previous generations, which is our of our great forefathers, doesn't feel the same. So I will be answering that in some time. Then we'll talk about EFT, as I mentioned. We'll talk about how it works, where it has come from, how can you use it in your daily life, and how is that an effective tool, especially for stress, anger, and anxiety. Then we also will experience live EFT tapping. Uh, so before I start talking about mental health, I would like to welcome all those who have joined this time and would like to say that from wherever you're joining in, just drop in from which part of the country you're joining in and what makes you come here. So let's start with understanding what is mental health. So when you hear of this word mental health, what is something which comes to your mind? मेरे दिमाग में जब मेरे को ये नहीं पता था साइकोलॉजी क्या है, बट द फैक्ट वाज कि मुझे जब ये नहीं पता था साइकोलॉजी क्या है तो मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है. बट व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ आई रियलाइज दैट मेंटल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशन से रिलेटेड नहीं है. इट इज ऑल्सो about how am I able to contribute enough to the society? How am I being able to handle my day-to-day situation I am facing, be it on a work front, be it on a personal front, or be it from a professional front. So, there are a lot of myths around mental health, which as a psychologist, I am trying to burst it, and I will try to burst it on this live today. So, the first thing which comes to my mind when I say that about mental health is that mental health means never feeling sad. So I have a different take on it. Well, we are humans, right? And we all are made up of emotions, and emotions carries energy. So how can we be emotionless? How can we not have emotions in our body? Therefore, every one of us have equal shares of our ups and downs. And it is not about that something is coming and then we are ignoring it. But mental health is all about how are we able to manage it well. Apart from that,
The second myth which comes with it is, and which is very common, is खाली उन्हीं लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है जिनका डायग्नोसिस हुआ है डिप्रेशन या एंजाइटी का. Well, this is true that people with such diagnosis need professional help, be it psychiatrist for the terms of medicines or psychologist in terms of therapy. But also, if we are not diagnosed it, but we still need somebody who just listens to us, who just gives us that safe space where we can easily express ourselves. We want space where we are very free to understand what goes inside us, where we are okay to, even open those pages of our lives which we don't want anybody to know, which we also call as shadow work, where we are accepting not just the positive parts of us, but also the negative part of ourselves. So, when I say this, mental health is not only for people who are undergoing depression and anxiety treatment, but also for people who just need a space. It is for all of us. And just like physical health is important, to an equal level, mental health is equally important for us. Why? Because first, if we are, in a very recent talk of mine, I said this, that if we are physically fit, right, we will be able to do things which we want to. But if we are mentally fit, right, when I say mentally fit, it does not means being stress free. Stress is a common thing to happen. So when I say being stress free, it simply means that uh, you are able to analyze what is going wrong with you, or you are able to use that stress for you can use that stress to improve your performances. As simple as the exam mein agar stress nahi hoga to I will not give my best. So that's what the thing is. So all of us needs it. Every one of us needs mental health. Then the third thing, talking about emotions make you weak. Well, no. Uh, talking about emotions does not make us weak. It is just a sign of a strength that we are self-aware and then we can understand our own emotions. The point is, हम आज की दुनिया में अपने आप को इतना मास्क करके रखते हैं कि हमें एक पॉइंट टाइम के बाद हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं. And because of that, again, I'm not saying masking ourselves is wrong. It is completely okay. We are humans and it has to happen. But if you don't talk about it, it will take unwanted space in our body. And when I say unwanted space in our body, there's a very good book called The Body Keeps the Score. The thing is, it will come out either as a disease or any physical symptom, because body को भी किसी चीज को संभालने के लिए शक्ति चाहिए होती है. बॉडी को भी किसी चीज को, उनका भी एक दायरा होता है. सो द पॉइंट इज कि आप इमोशंस को सप्रेस नहीं कर सकते बहुत लंबे टाइम तक. एंड आपने ये नोटिस किया होगा अपने लाइफ में, अगर आप कुछ चीजें बहुत देर तक नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो वो एज फ्रस्ट्रेशन और एंगर और इरिटेशन के रूप में आपको दिखती है. देयर आर just like when I was working in a hospital, I know that a lot of uh, diseases like sugar, diabetes are because of the stress which are present in our mind and body. So talking about emotions will make you feel better, and it is completely okay to talk about your emotions. Why? Because you will feel very nice. You will feel very light when you talk about your emotions. So I see a lot of new viewers joining in. I welcome all of you. Thank you, Shikha ma'am, that you're coming from Lucknow. Uh, Archana ma'am, you're from USA. That's so good that uh, you have joined in today. So today we are talking about mental health,
And we're also introducing a new technique called EFT, which is an emotional freedom technique. It's a psychological acupressure which helps you deal with your emotions better. So there is a question also coming up that mental health is a stigma, and how do you open the conversation with you? I will definitely come to it once I talk about how is it affecting in these current day. So, uh, what affects our mental health, or what are the things we should be very careful about when we think about our mental health? So the first thing is that, as I talked about, mental health isn't just about, it's not just about our thoughts. It is also about our biology, it is also about our psychology, it is also about our physical health, and also social environment. So when I say biology, it means our brain chemistry and our genetics. Sometimes we have seen cases where when a father has anxiety, there are probable chances of daughter or son having anxiety. Maybe the levels could be different, but definitely. But again, dealing it is in our hand if we have gotten it genetically. Psychologically, why, how it affects our mental health. आज की दुनिया में अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं, so they have so much of exposure of social media in the time where we are open to having a lot of information. We choose to ignore information which is good for us, but we choose those informations which are not good for us, because probably that's how human mind is trained with. So uh, say for example you had some major experience in your life, okay, it could be a health issue, it could be a fight with the boss, it could be, fight with any of your relatives, any nok jhok between your relatives, or matlab kuch bhi, anything major, okay, which has made you feel bad, or it did not give you a good impact, right? That becomes a part of our experience which is not so good for us. We then, in further coming days, we continuously think about it. We have like continuous thoughts which comes in our mind, and then we go on with those thoughts only. So that becomes a part of our trauma. So trauma is something which is very, I would like to take a moment and explain you what trauma is, even though we will not dive very deeper on it. But yes, trauma is, अगर मैं इसकी definition बताऊं, it is not what has happened with you, it is what the impact is after the certain incident has happened with you. So for example, if a child was scolded in the class by a teacher, and एक class में एक बच्चे को उसकी teacher ने डांटा that do you know what, you have not done the homework, आपने homework नहीं खड़ा किया है, अब आज पूरे दिन आप क्लास के बाहर खड़े रहोगे. Though the teacher's intention was very good, okay, though the child might have some reasons of not doing the homework, but just maybe the tonality was very rude when the teacher said it. This can also be a trauma for the child, because the child may have created that belief saying that मैम तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, people do not respect me, I am not wanted. So it was not the incident which actually impacted the child, it is the impact which has created, or the belief, or the decision he made for himself. He could also get revenges post that, right? Anything can happen. So the impact which an incident puts on you is what is called trauma. So again, traumas, a lot of emotions, the unexpressed emotions also affects our mental health. Sometimes we might not have a supportive family, sometimes we might not have our supportive friends. हमारे पास ऐसे लोग नहीं होते जिनसे हम शेयर कर पाए, और अगर हम शेयर करते हैं तो हमें बहुत जजमेंटल फील होता है कि मैं बोलूंगा तो बोलेगा तेरी ही गलती थी. Such kind of things do come in a lot of our mind. But the point is, अगर इस दुनिया में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई एक, कोई दो तो होगा जो आपसे बात करने को रेडी होगा, जो आपको नॉन जज, दे डोंट जज यू ऑन एनीथिंग. और जैसे मैं, इफ आई टेल यू माय एग्जांपल एज अ साइकोलॉजिस्ट,
I do not have a lot of people to talk to and express what I am feeling or what I'm going through, but I have those two people in my life जिनके सामने मैं कुछ भी और कभी भी कैसे भी बोल सकती हूँ. They don't judge me on how I talk. And अगर say for example they're busy with their own lives, which every individual is, I take out my phone, I take out my notes, and then I start writing about how I am feeling. So that's how I express myself when nobody is around me. Third thing which affects our mental health is the social environment. The family culture you belong to. If there is a family जिसमें regularly झगड़े होते हैं, तो obviously आपकी mental health को affect करेगा. आप बहुत गुस्से में रहोगे, आप irritated mode में रहोगे, and because your family environment is like that, so your mindset would be कि हर कोई ऐसा होता है. That can also impact your mental health, your work, your relationships, and also your neighborhood. There are times when we do not have a good neighborhood and it just feels like we are living in a very lame world. Well, that is very common to happen. But then we need to check in with ourselves. Is that helping us or is it affecting us? If your answer is affecting us, you have to check what is affecting you at that time. Is it your neighbors or is it your inner thing which is affecting you? So that's what you need to check. The third thing which I say is physical health. Now, how is it affecting your mental health? Say for example, आपने कभी notice किया होगा, okay, there are 7 people in this live right now and I want all of you to answer me, okay? जब आपका mood खराब होता है, so do you eat a lot or do you binge eat a lot? जब आपका mood खराब होता है तो आपको बहुत खाने का मन करता होगा, हो सकता है आपको बहुत नींद भी आती होगी. Is it क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? If you could answer it in yes or no in the comment box. कि जब आपका मूड खराब होता है तो आपको बहुत भूख लगती है, या कई बार जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब भी आपको बहुत खाने का मन करता है, या कई बार जब आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है तो भी आप ओवर ईट कर जाते हो. The simple logic is our mind and body is connected. Our gut health depends upon our mind. And this is a beautiful, and it's another time talk where we talk about, gut and mental health. But yes, it affects the what you eat. अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आज की इतनी बढ़ती हुई दुनिया में आप सात्विक भोजन खाइए, which is again not possible for all of us. But क्या हम mindful eating कर सकते हैं? क्या हम we can choose what we eat? Exactly, Shikha ma'am, when you say that you don't feel like eating at all, that is also one of the things. Either you eat a lot or you just stop. So the point which I'm trying to tell you here is that no matter what, आपको stress होगा तो आपका gut health में problem आएगी. And that's why we also say जब disease होता है, there is some distress or discomfort in your body. And when we say that, I believe, and all the psychologists believe, that if you work on your emotions, your physical health will take just a lesser time than it will take when you don't focus on your emotions. So now when I talk about this, there is a mind-body connection. So क्या आपको कभी ऐसा कोई सिचुएशन आई है आपके आसपास जहां पे आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, दैट्स जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग, राइट? या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, या आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपको एक स्ट्रेस फील होगा, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर से एक फीलिंग आ जाती है ना, अच्छा आज ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा. दैट इज वाई माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है, इसलिए आपको बता पा रहा है. जो सिग्नल्स आप कॉन्शियसली नहीं ले पा रहे हो, वो आपकी बॉडी अनकॉन्शियसली ले रही है. In fact, this is all because our mental and physical health is connected. For example, you're feeling anxious. आपको एंजाइटी हो रही है, आपको घबराहट फील हो रही है, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है. आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? आपका चेस्ट टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, आपका
पेट अपसेट होना स्टार्ट हो जाएगा. लाइक आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. ओके, वेन एवर आई ट्रैवल, जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है चाहे ट्रेन से या फ्लाइट से, उसके ट्रैवल करने के 1 घंटे पहले तक मेरा पेट इतना भारी होता है दैट I just feel so uncomfortable and I feel like I cannot travel. And then later on I realized इमोशंस क्या है मेरे, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ. तो आई रियलाइज मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल करने में डर लगता है. सो व्हेन आई वर्कड ऑन दैट फियर, द नेक्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड देयर वाज नो टाइटनेस इन माय स्टमक. सो आई एड्रेस्ड माय इमोशंस. मेरा फिजिकल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. अब जब मैं ये कह रही हूँ कि आपको रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, स्वेटी पाम्स हो जाते हैं, अपसेट स्टमक हो जाता है, टाइट चेस्ट हो जाता है, कई लोग इसको हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीज भी मानते हैं. वेल, बोथ आर डिफरेंट. कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स और एंजाइटी के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट यू नीड टू रियलाइज हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट. So when I say mind-body connection, these aren't just thoughts. They are the physical reactions which are stored in our body. So the third part, before I move to introduction to EFT and teaching you EFT as a technique, I want to touch a little bit upon therapy. Why is therapy needed these days? And why do not people agree to go to therapy? So the most common thing when I say therapy, समाज क्या सोचेगा, मैं पागल हूं जो थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूं. सो द पॉइंट इज, थेरेपी खाली उन लोगों को जरूरत नहीं है जो एक्चुअली में स्ट्रेस में है, या ट्रॉमा है, या चाइल्डहुड ऐसी मेमोरीज है जो बार बार आ रही हैं, जिनको नींद नहीं आती है, या एक्स एंड वाई जेड रीजंस. थेरेपी उन लोगों के लिए भी है, जिसे मैंने एकदम टॉक की शुरुआत में बोला, जो लोगों को कोई स्पेस चाहिए वेंट आउट करने के लिए, कोई चाहिए कि उनको बैठ के नॉन जजमेंटली सुने, समझें कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं अपनी जिंदगी में. सो टॉक थेरेपी होता क्या है, इसमें एक काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट और आप एक कंफर्टेबल स्पेस में बैठते हो. प्रोबेबली वो क्लिनिक होता है या ऑनलाइन सेटअप में आप अपने घर के कंफर्ट में होते हो और थेरेपिस्ट अपने. Once they sit together, वो आप, if you are going for a therapy, वो आपसे पूछेंगे what brings you here, आपको आप यहाँ पे क्यों आए हो. आप उनको बताओगे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है. नाउ आप किसी रैंडम इंसान को बोलोगे तो वो सजेशंस देना स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, नींद नहीं आ रही है, एक्सरसाइज करो ना, फोन साइड में छोड़ के सोना, बहुत सारे सजेशंस देंगे, जिसके लिए हम वहां नहीं जाते हैं. कई बार हम जा रहे हैं बात करने के लिए, बट बात करने से ज्यादा हमें सजेशंस मिल रहे हैं. थेरेपी में ये नहीं होता है. थेरेपी इज वेरी डायरेक्टिव एंड नॉट सजेस्टिव. बट क्या सिर्फ टॉक थेरेपी से काम हो जाता है? हाँ भी, ना भी. कई बार सिर्फ टॉक थेरेपी से ही आप ठीक हो सकते हो, बात करने से ठीक हो सकते हो, लेकिन कई बार कुछ इंटरवेंशंस या टेक्निक्स आपको यूज करने की जरूरत डेफिनेटली होती है. थेरेपी इज वेरी पावरफुल. it is helping us to process our emotions, and sometimes it's enough to fully heal. बिकॉज इमोशंस जो होते हैं हमारे, वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होते, वो हमारे बॉडी में भी होते हैं. और जब मैं आपको EFT सिखाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आपके इमोशंस आपके बॉडी का पार्ट होते हैं. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, इमेजिन आपको ऊंचाई से बहुत डर लगता है, यू हैव फियर ऑफ हाइट्स, एंड नो अमाउंट ऑफ टॉकिंग कैन इरेज इट. आप कितनी ही बात कर लो उस डर के बारे में, वो डर नहीं खत्म होगा, नो मैटर व्हाट. Okay, but your body will still react with panic जब आप किसी भी edge के पास जाओगे. And that's where EFT comes in, and that's where emotional freedom technique comes in, because it helps us release those emotional responses for our body which are stored in us. And before I move to EFT and telling you what EFT is, answering to the question कि पहले बच्चे क्यों खुश रहते थे
और आप क्यों नहीं रहते हैं? एक्सपोजर इज वन ऑफ द रीजन. बट आई अग्री टू डिसअग्री कि पहले डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज आपको नहीं पता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. पहले के जमाने में इसको बहुत लाइटली लिया जाता था, इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया जाता था. पहले इसको ऊपरी ऊपरी ताकत, झाड़ फूक, एक्स एक्स वाई, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही लाइफ होता है. एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल यू वुड हैव, जिनसे आप बात कर सकते थे रात में. ना चौपाल लगते थे पहले, पेड़ के नीचे बैठ के लोग बात करते थे, अरे मेरी सास ने ये करा, अरे मेरे पति ने ये करा, मेरे तो आज काम में ये हुआ, मैंने ऐसा करा काम में. अगेन आप आज देख लो, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग 10 अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं. तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने जमाने में लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे, बट शायद हम अवेयर नहीं थे, और अगर हम थे भी तो उस डर के चलते हम उसको इग्नोर करते थे. So now coming to the question which was asked before, that mental health is a stigma and how do you open the conversation with the youth? The simplest way, आज के यूथ को क्या चाहिए? आज के यूथ को चाहिए कि कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें ये बताए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. राइट, दैट्स व्हाट दे वांट टू हियर. वो कभी ये सुनना नहीं चाहते कि मैं गलत कर रहा हूँ. The first thing to ask the youth is, how are you feeling? That's the first question you ask. Okay, how is all of this making you feel? How are your studies going on? या मान लीजिए अगर किसी को स्टडीज के बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हो, I'm sure you're a lot burdened by your studies. How can I help you? Do you think a lot of times you're not able to express yourself even if you need it? And then they'll start ranting. हाँ, आपको पता है मेरे साथ तो ऐसा हुआ. मैं, and then you take them from there. That's the simplest way to start talking about or having an open conversation about you. Treating them as a friend, understanding, giving them a space that you can share with us is very, very important. Making them know that we are there for you. So there are certain sentences which we can use with each other, okay? So certain sentences are, I am here for you. I understand what you're going through. Don't worry, we are in it together. Don't, if there's somebody comes that, okay, I am so stressed right now, I have all these relationship issues also, and I don't know what to do with my life. It sounds very confusing when you say all of this because three different aspects. बहुत stress हो रहा होगा ना आपको. Then the youth would be like, हाँ सर मैम भैया बहुत बहुत ज्यादा confused हो रही हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. Okay, now that you have told me about your confusion, how do you think I can help you? आप ये नहीं पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, आप उनसे पूछ रहे हो how can I help you? So either they'll say कि आप मुझे किसी से मिलवा दो, और either they'll say that नहीं आपको पता है एक्चुअली कंफ्यूजन ये नहीं है, एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई में इसको ऐसे कैसे करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे फील क्या हो रहा है. बस वो है आपका ओपनिंग सेंटेंस एंड दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स. सो आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. Now, let's start the most favorite part of this talk. But I will only start telling you about what EFT is when you mention in the chat that are you excited to know what EFT is. So I want comments. I'll wait for 2 minutes, not like 2 minutes, and see how many of you are excited to know about EFT, or if you have ever heard about EFT before. So I'll count till 10 and आपको yes or no डालना है comment box में that whether you know about EFT or not. And then I will take a moment to share a slide with you. Okay, so I have 2 yeses as of now.
Have you ever heard about EFT before? That's my question. Okay, so just give me a minute to share my screen with all of you. So before I share my screen, I would like to tell you a basic about what EFT is. Okay. So EFT means emotional freedom technique. Okay. Please let me know if my screen is visible for all of you. If my presentation is visible for all of you. Yes, perfect. So I will start. Okay. So what is EFT? EFT is simply tapping on your meridian points on the body. Okay. Actually, it was a key element which was for the self help, right? Because again, as I said, na, ki therapy or mental health was not talked about a lot before. So this technique was introduced for such people who were not able to go to somebody for help. That was a self-help tool कि आप घर बैठ के भी अपने आप इसको use कर सकते हो. This was used for stress regulation and personal transformation. In the Eastern philosophy, it was also called as acupuncture. Mostly ये चाइना का concept है. अब आप अपने घर पे जैसे मेरी मम्मी जब मेरा सर दर्द होता है ना तो मेरे इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर देती है. ओके, बट जब ये एक्यूप्रेशर मिलता है तो मेरी चीखें निकलती हैं और मैं बेड से कूद जाती हूँ. लेकिन जब मैं EFT करती हूँ, I simply have to just tap very very gently on my body and I realize what I was feeling has just gone or processed in a minute. So इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड इफ वी आर हैविंग एनी फिजिकल डिजीज or an issue, that is because the flow of energy in our body is not proper. And when we tap on these meridian points, our flow of energy becomes fine and then we are able to process our emotions. So when I say this, that we are able to process it, what is EFT and how exactly do we do this? Okay. So before I tell you how I do it, since I cannot see any of you, I would want you to sit comfortably, keep your phones in front of you, and just follow what I am asking you to do. Okay. So Sohrab has asked a question, how can EFT be integrated into daily life for better mental health? Yes, Sohrab, I will definitely come to that by the end when we, towards the end, okay? So right now, I just want you to sit straight, okay, and just follow me. I will adjust my camera. Okay. Now, I want you to take one hand, okay, and the other hand with 4 fingers and start gently tapping on the side of the hand. Okay, since I am not able to see all of you, I would just require a heart from all of you, that and I'll know that you're following me. Okay, so that's the first meridian point. The second meridian point is the top of our head. आपने छोटे बच्चों के सिर पे soft सा एरिया देखा होगा, and exactly when you take your hands up, दोनों कानों से जब आप ऐसे दोनों कान से ट्रेस करोगे तो the center of the head is the another meridian point. This is called top of the head. Next point is between the eyebrows. Next point is between the eyebrows. Then side of the eye. Side of the eye. Do not force it upon yourself and don't be harsh with yourself. Then under the eyes. Under the eyes.
then under the nose, under the nose. Next point is chin point. Next point is chin point. Next point is collarbone point. When I say collarbone point, it means if you trace your collarbone, you will find a small here like a ball-like structure just below the collarbone, like an inch below. And when you tap on it, it might feel little painful, and that's am I now visible to all of you? There's a comment that I've gone blank. Please confirm if I'm visible to all of you. You can hear me. Perfect. Okay. So that's the collarbone point. Okay. The next point is the underarm point. Next point is the underarm point. Next, wrist point. Wrist point. Next, take out your thumb like this and see the side of the thumb. Tap there. Index finger, ring finger, sorry, the middle finger, ring finger, and then the little finger. And then finally, you tap back here. So these are the 16 meridian points in EFT. Okay, let's repeat it. 1, this time you don't tap, you just touch those points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and back to 16. Okay. Now, so are these points clear to all of you? क्या ये points आप सबको clear है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Only if you say yes, I will be able to move on. Okay. अब देखो, ये तो सीख लिया कि points क्या क्या होते हैं, but EFT को करते कैसे हैं? तो इसमें करने के लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है? आपको क्या बोलना है और क्या सोचना है, और दूसरा आपको टैप कहाँ पे करना है. तो हमने सेकंड पॉइंट तो कवर कर लिया कि हमें टैप कहाँ पे करना है, बट व्हाट डू यू से एंड व्हाट डू यू थिंक? EFT इमोशंस के लिए होता है, राइट? तो हम वही बोलेंगे जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है, हम वही बोलेंगे जो हमको फील हो रहा है, ठीक है? एनी काइंड ऑफ इमोशन, आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत दुखी, मतलब मेरे को बहुत दुखी फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटेड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और एनी काइंड ऑफ इमोशंस व्हिच इज कमिंग टू यू. Okay, once you know that, you straightforward start doing tapping. Okay, now अभी आपने मेरे से दो वर्ड सुने होंगे, one is tapping and the other one is EFT. There is a difference between the two, and what is the difference? EFT is emotional freedom technique and tapping is tapping. ठीक है? जो EFT होता है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और टैपिंग उसका पार्ट है, ठीक है? EFT इन जनरल में आप कोर इशू तक जाके उस इशू के एनर्जी लेवल्स को पॉजिटिव करके वहां न्यू बिलीफ बना के you work on your emotions. Okay, but in tapping you simply work on your emotions. आप बहुत ज्यादा, आप सिर्फ प्रेजेंट इमोशंस को प्रोसेस कर पा रहे हो, बट यू विल नॉट डू अ वेरी डीपर वर्क. जब हम EFT करते हैं तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ. जब हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग सिंपली मीन्स
just tapping gently on all these meridian points. Okay. Now, what you say in EFT. You can take a screenshot as well to just in case if you want to. सबसे पहले आप अपने इनिशियल कंसर्न के बारे में जानते हो. से फॉर एग्जाम्पल आपको सैड फील हो रहा है, ठीक है. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सैडनेस. नाउ सैड तो फील हो रहा है. व्हाई एम आई फीलिंग दैट सैड? कि आई एम फीलिंग सैड क्योंकि यार मेरी लड़ाई मेरे भाई से हो गई. आई एम फीलिंग सैड क्योंकि मेरी यार बॉस से लड़ाई हो गई. Cool? Now you know these two things. Now you will check where in your body are you feeling this. आपको अपने शरीर में ये कहाँ महसूस हो रहा है. Say for example, you close your eyes currently if you are watching this video live or even if it is a replay for you right now, close your eyes and see आपके बॉडी में कहाँ आपको वो sadness feel हो रही है. And you will get an answer to it. It could be your chest, head. There is no limited to कि मुझे यही होता है. It could be anywhere in your body. Okay. And then you add a self suggestion or an affirmation कि मुझे क्या change. Just a second. Sorry. You'll add a suggestion कि मुझे क्या change करना है इसमें. So I've written a line there which says that even though I'm feeling sad in my chest, I still love and accept myself. Okay, that's how you say it. हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी भाई से लड़ाई हो गई है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ और प्यार करता हूँ. For a lot of us, we'll say that we don't love ourselves, which is okay. अगर आपको नहीं है बोलने का मन I love myself, that's completely okay. You can use alternatives to say. Okay? जब आपको ये पता चल गया, now you're ready to tap. And how would you do that? Okay? Even though I am feeling sad in my body, in my chest, because I had a fight with my brother, I still love and accept myself. You do this for 3 times. Even though मुझे sad feel हो रहा है अपने chest में और मेरा chest बहुत heavy हो रहा है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकारता हूँ. Even though मुझे ये stress feel हो रहा है, I accept myself. All the stress in my body, ये सारा stress जो मेरे को हुआ है क्योंकि मेरी भाई से लड़ाई हो चुकी है. मुझे एकदम नहीं पसंद है भाई से लड़ाई करना. शायद मेरी गलती हो सकती है पर उसने मेरे से बहुत रूडली बात की. It is really affecting me right now. All of this is affecting me right now. बहुत ज्यादा affect कर रहा है मेरे को. बहुत ज्यादा affect कर रहा है. I'm feeling so sad right now in my body. I'm feeling so sad. I just don't want to talk to anyone. I feel so sad. Take a deep breath in. Exhale and check क्या आपको अभी भी उतना ही sad feel हो रहा है. If you are on a live and practicing with me, I would love to have your comments over कि क्या आपने EFT को try करा, tapping try करा. Usually जब हम tap करते हैं तो हम face पे और body पे tap करते हैं, ठीक है. कई बार मान लीजिए हम पब्लिक स्पेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं पब्लिक में बैठे हो, नहीं समझ आ रहा कि मेरे को एंग्शियस फील हो रहा है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन मुझे टैप करना है, कैसे करूं. पॉइंट इज आप यहाँ पे सिर्फ टचिंग दोस पॉइंट्स विल आल्सो डू एन इक्वल वर्क विच अ टैपिंग विल डू. वो पॉइंट टच होना चाहिए, दैट इज व्हाट मैटर्स. ओके. एंड अगेन कोई कंपल्शन नहीं है बट सजेस्टिव है कि 7 टाइम्स हम हर पॉइंट पे टैप करें. मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन क्लिक द फोटो डेफिनेटली. दिस इज द प्रोसेस. जब आप EFT सेशन के लिए या टैपिंग के लिए बैठते हो अपने साथ, तो आपको पहले अपने इमोशंस में फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको पहले ये समझना है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे क्या इमोशंस आ रहे हैं, मेरी क्या भावनाएं आ रही हैं. वो भावनाएं मुझे अपने शरीर में कहाँ महसूस हो रही है
ऑन एन लेवल 0 to 10, 0 to 10 में मुझे ये भावनाएं कहाँ महसूस हो रही है, मैं क्या चाहता हूं करना उसके बाद, एंड देन you do all, then you tap on these points. Okay, 2 to 3 rounds, max 3 rounds आप कर सकते हो. Post that, take a deep breath, exhale, and see if your intensity of stress has reduced or not reduced. So this was about EFT. कई बार जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती कि मैं अपने आप को पसंद नहीं करती, या मुझे अपने आप से प्यार नहीं है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से नहीं स्वीकारती. तो देयर आर अदर वेज ऑफ ऑल्सो डीलिंग विद इट, जैसे कि आई एम ओके, मैं ठीक हूं, हालांकि मुझे ये सारी चीजें हो रही है, बट दैट्स ओके, आई एम स्टिल अ गुड ह्यूमन. Sorry. Yeah, I'm still a good human. Okay. I am open to accepting myself. I am open to the changes. I am a very good daughter. I'm a very good son. And XYZ sentences you can say. फिलहाल EFT के इंट्रोडक्शन सेशंस मैं एवरी वीक प्लान कर रही हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इट and also understanding it in a deeper manner, I will be sharing a link in the description soon where you can join our intro sessions. Also, moving forward, the power of choice. मेरे को अगर हील करना है तो मुझे वो चूज करना पड़ेगा. अगर आप एक डॉक्टर हैं या आप एक टीचर हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पेशेंट्स पे, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट्स पे दवाई तभी काम करेगी जब वो दवाई को एक्सेप्ट करेगा या वो आप पे विश्वास करेगा. या टीचर हो तो आप उसको तभी पढ़ा सकते हो जब उसे पढ़ने का मन होगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते. हीलिंग भी ऐसे ही होती है. अगर आपने चूज किया है कि मुझे सैड से हैप्पी फील करना है तो आप कर पाओगे, राइट? सो चॉइस plays a very important role. So I have a question to all of you. Okay, if I ask you, all of you, all of you who are live in the session, if I ask you, what would you choose, a red pen or a blue pen? I want your answers. What would you choose, a red pen or a blue pen? What will you choose, red or blue? Blue. Why blue? Okay, so let me give this answer. This is a very tricky question and the answer I'm looking for is मैं ब्लू चूज करूंगी क्योंकि मेरी मर्जी है. I choose blue because it's my choice. And if it's my choice, I do not want to give you any clarification. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये क्यों किया. मैंने किया क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे ये करना है. सेम हीलिंग में भी होता है. मैंने चूज किया कि मुझे खुश रहना है और मुझे खुश हो जाना है, तो मैं खुश हो जाऊंगी. Then I don't have to tell people and explain them कि मुझे खुश क्यों होना है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है. And that is why choosing to heal is very important. I have a lot of people in terms of mental health or in terms of healing कि तुम अपने आप को इतना हील क्यों करती हो, तुम्हारे लाइफ में क्या ही इतनी प्रॉब्लम्स है जो तुम अपने आप को हील करना चाहती हो. पहले तो जवाब देना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, बट नाउ व्हेन आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ चॉइस, आई से इफ आई एम इन अ ग्राउंड फुल ऑफ मड, ठीक है, ये मेरी चॉइस है कि मैं उस मड से बाहर आ जाऊं या मैं उस मड में ही रहूं. और ये मेरी चॉइस है कि मैं उस मड से बाहर निकलना चाहती हूँ. अगर आप अवेयर होके भी अनअवेयर जैसा एक्ट कर रहे हो तो ये आपकी चॉइस है. लेकिन अगर अवेयर होके मैं स्टेप लेना चाहती हूँ तो ये भी मेरी चॉइस है. सो दैट्स हाउ द पावर ऑफ चॉइस कम्स इन.
So coming to this why and how does EFT works? So basically हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस सेंटर होता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं, एंड एक होता है मेमोरी सेंटर जिसको हम हिपोकैम्पस बोलते हैं. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेमोरी फॉर्मेशन के लिए. रिसर्चर्स प्रूव करती है कि ट्रेडिशनल थेरेपी के मुताबिक कंपेयर ईएफटी हमारे शरीर के कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में दुगनी तरीके से इफेक्टिव है. ईएफटी एक साइंटिफिक बैक्ड अप टेक्निक है. ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है जो हर साइकोलॉजिस्ट आज के दिन में यूज करना चाहता है. WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने EFT एज अ टेक्निक को साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक माना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम टैपिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, some that EFT is a healing technique which is responsible to manage your physical symptoms as well as your emotion system, emotions. It is it also says that the belief you have formed is also creating a lot of emotions in you, which is disrupting your energy system. And when you tap on these meridian points, you are able to let that energy system flow in a correct manner. Okay. जब आप EFT करते हो तो it does not means कि आप emotionless हो जाते हो. It simply means कि आप अब उस चीज पे हंस सकते हो, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि उसको भूल जाओ या आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं. rather we say that कि अब जितना आप उस मेमोरी को याद करके या उस पर्टिकुलर इंसिडेंट या उस पर्टिकुलर इमोशन के लिए फील करते, जैसे अगर आपको बहुत सैड फील हो रहा है किसी चीज को लेके, तो अब आप उतना सैड नहीं फील करोगे या आप कुछ भी नहीं फील करोगे. व्हेन आई से कुछ भी नहीं, यू विल फील पॉजिटिव अबाउट इट. ओके, सो दीज आर ऑल अप्रूवन थिंग्स. एंड बेनिफिट्स कुछ है कि दैट हेल्प्स यू रिलीव योर स्ट्रेस, it relieves your anxiety, it relieves all the negative emotions and physical issues. It also relieves the effects of trauma. If you all want to understand what trauma is, I will definitely come up with our next topic as trauma. And it also improves your performances. In fact, आप देखना बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन EFT एंड टैपिंग को एज अ टूल यूज करते हैं. It also lowers your cortisol level, and you can use it for everything and anything in your life. मतलब जिसने क्वेश्चन पूछा था ना that how can we use it for our everyday life, the answer is for you. Everywhere you can use EFT, in your life. आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको पैरों में दर्द हो रही है, आपको कमर में दर्द हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है. EFT वर्क्स अमेजिंगली ऑन कॉन्स्टिपेशन. उसमें बस आपको, जैसे मैं जब मेरे को होता है तो मैं यूजुअली इसको इस तरीके से यूज करती हूँ. हालांकि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और मुझे बहुत इरिटेटेड फील हो रहा है, बट दैट्स ओके. आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं अपने शरीर को हल्का महसूस कराने का पावर देती हूँ. आई रिलीज एवरीथिंग विच इज स्टॉपिंग मी राइट नाउ. ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस. तो ये सारी चीजें जब आप बोलते हो अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की एनर्जी सिस्टम का जो फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है वो वापस अपने फ्लो पे आ जाता है. एंड देन यू आर एबल टू ऑल्सो process your emotions, and you are able to heal yourself from within. So that is what was about EFT. हमारे टाइम पे हमारे भारत में there is organization called EFT MRA India, जहाँ पे EFT के practitioners की ट्रेनिंग होती है. We are internationally certified trainers, we are internationally certified practitioners, और internationally certified trainers भी होते हैं.
EFT की ट्रेनिंग पूरे भारत में फिलहाल अभी 3 जगह पे होती है, बॉम्बे, बैंगलोर एंड बॉम्बे, बैंगलोर एंड दिल्ली, 3 जगह पे होती है। फिलहाल हमारी 2 ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आगे आने वाले कुछ 1-2 महीनों के अंदर और भी ट्रेनिंग्स आ रही हैं। तो आपको अगर उस ट्रेनिंग्स के बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक ऐड कर दूंगी, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, अगर मेरी आज की टॉक के बाद आपको ऐसा लगा कि कोई चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है और आप चाह रहे हो उससे बाहर निकलना पर नहीं आ पा रहे हो, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और चरण कमल हीलिंग ग्रुप के भी पेज पे जाके आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो फॉर वन ऑन वन सेशंस। So I hope that I was able to answer all the questions which was asked, and I will I will just end this talk by saying that अगर आप शरीर से सही हो तो आप सब कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेंटली सही हो और इमोशनली बैलेंस्ड हो तो आप वो भी कर सकते हो जो आपके दायरे में नहीं है। एंड यू हैव जस्ट वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट। अपने पे ध्यान दीजिए, दूसरों को प्रायोरिटी पे रखिए, नो मैटर व्हाट, मतलब सब इम्पोर्टेंट है लेकिन आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। अपने आप को टाइम दीजिए, माइंडफुलनेस करिए, मेडिटेशन करिए। सबसे मेडिटेशन नहीं होती तो सिर्फ अपने साथ बैठ जाइए शांति से 2 मिनट, अपने थॉट्स, अपने विचारों को अपने डायरी में लिखिए। अगर आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपने डायरी पे लिखिए। अच्छे गाने सुनिए व्हेन यू आर फीलिंग लो। जैसे मेरे को जब लो फील होता है तो मैं यूजुअली गानों की तरफ भागती हूँ, बिकॉज दैट मेक्स मी फील वेरी फुल एंड वेरी हैप्पी पोस्ट दैट। तो गानों को सुनिए। ऐसे पॉडकास्ट, बहुत सारे पॉडकास्ट ओवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें सुनिए। एंड ऑब्वियसली रीड गुड बुक्स। रीडिंग इज एन एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज पढ़ने से आपको शायद वो चीजें जो कोई बोल रहा है शायद उतनी इफेक्ट ना करे जितनी आपको पढ़ने के बाद इफेक्ट कर रही है। एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर टॉक्स लाइक दिस। एंड प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स फॉर हाउ आपको ये टॉक कैसी लगी, what was the best part of this talk, आपने आज क्या नया सीखा इस टॉक के थ्रू। एंड and definitely you can connect to me. Our patients want to know, okay, so one on one sessions के लिए जैसे मैंने बोला आप मेरे Instagram channel पे आके एक DM कर सकते हो and I shall share you the link. और description पे मेरे one on one sessions में आने के लिए I will post a link that you can just click there and you can definitely go and book your slots. Yes, for Charan Kamal patients, I have a very special slot of 3 days in a week. I will share that very soon with all of you, and I will put that in the description as well. So आपको सारे links descriptions पे मिल जाएंगे post the slide ends. And I hope to see you all. I hope that it was an informative session and you got something out of it. There was something you learned today. There was something new which was for you there. So आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और वो करिएगा जो आपका मन करता है। Thank you so much. Thank you so much for being there. Thank you.